फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में हमने बर्कर हेड ड्रिल कंप्लीट किया था विच वाज रीडिंग टेक्स्ट 2, और उसके बाद वी हैड टू कंप्लीट सम ऑफ द एक्सरसाइजेस विच आर नॉट येट कंप्लीटेड। सो आज की वीडियो हमारी उन एक्सरसाइजेस के लिए होगी। अच्छा, पेज नंबर 14 पर आपके इसी बुक में इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 में जब हमने चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके नीचे तकरीबन कोई 10 क्वेश्चंस हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर टू बी कंप्लीटेड बाय यू पीपल। आई विल बी वेटिंग फॉर यू टिल सैटरडे, कमिंग सैटरडे, मतलब मंडे को जब ये अपलोड हो रहा होगा उसके बाद कमिंग सैटरडे, तब तक मुझे आप ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट मी ऑल दीज एक्सरसाइजेज, मीन्स यू विल हैव अ कंप्लीट वीक जिसमें आपने ये 10 क्वेश्चंस भी करने होंगे, एंड देन देयर इज ए कंपोजिशन जिसमें आपको एक ऐसे लिखना है छोटा सा 250 to 300 वर्ड्स का। इट कुड बी ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन और अ ट्रू स्टोरी ऑफ ए हीरोइक बिहेवियर। अच्छा, उसके बाद जिस तरह इंटरमीडिएट की इंग्लिश या फर्स्ट ईयर दोनों में आप लोगों को वर्ड्स फॉर स्टडी दिया हुआ है। दिस वर्ड्स फॉर स्टडी इज टू build your vocabulary. This is to help you enhance your vocabulary so that once you start writing तो आपके writing skills भी आज खुद develop होना शुरू हो। अच्छा, इनमें एक चीज़ ये है कि इन वर्ड्स को मीनिंग्स इनके सिमिलर होती हैं, सिनोनिम्स होते हैं, बट उनके यूजेजेस जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे अंग्रेज़ी में हम एक बात करते हैं, एक जुमला अगर हम उर्दू में बोलते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है, तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो दिस वुड नॉट बी के देयर इज़ नो प्लेस टू सिट, बट उसका सही आंसर जो होता है या सही जो वर्ड यूज़ करना है प्लेस की जगह, दैट इज़ रूम, देयर इज़ नो रूम टू सिट। इसी तरह से जब भी हम अल्फाज का यूज़ करते हैं तो उनका सही मकसद का हमें आना लाजिम होता है, सो दैट वो वर्ड मिसफिट ना करे, बट इट शुड फिट विद द सिचुएशन और द कंडीशन, ताकि उस वर्ड की खूबसूरती जो है वो आपके जुमलों को, आपके सेंटेंसेस को या आपके पूरे टेक्स्ट को और खूबसूरत बनाए। सो फॉर दैट रीज़न आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में एक्सेप्ट, डिसएग्री, अग्री एंड डिसएग्री, दीज आर द वर्ड्स व्हिच हैव बीन गिवन फॉर स्टडी। नाउ एक्सेप्ट मीन्स take a direct accept takes a direct object. For instance, agree is used with a preposition to agree with somebody, to agree to a proposal or suggestion. Did he accept your proposal? एक sentence आता है, तो इसी जगह पर ऐसा नहीं हो सकता कि did he agree to your proposal, वो होगा फिर did he agree to your suggestion. For a suggestion we use agree. There needs to be an agreement for a suggestion, but there needs to be acceptance for a proposal, not the agreement for a proposal. अच्छा, इसी तरह से did he agree with you? Now with what you said, इसका मतलब ये कि जो आपने बात कही क्या उससे किसी और ने अग्री किया, राजी हुए, और do you agree, क्या आप उस चीज़ से राजी हो सकते हैं या हो हैं। इसी तरह से agree is also used with an infinitive and with a that clause. Accept is never used in these two ways. For instance, कैसे, will you accept 10 pounds or 10 rupees for your old camera? Will you agree to accept 10 pounds for your old camera? They agreed to make another film. She agreed that it was too wet to go out. Now, difference here, disagree is used with the preposition with. I disagree with you. It's never going to be I disagree you. ये कभी भी नहीं हो सकता। With your suggestion or with what you say, जो भी आप मतलब बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, after और before इसी तरह के वर्ड्स हैं prepositions में। I'm sorry. अच्छा, these two prepositions are used for time and order or arrangement. मिसाल के तौर पर I'll come after lunch, ज़ाहिर है मैं लंच के बाद ही वापस आऊँगा या लंच के बाद आऊँगा। Can you come before 7 o'clock? क्या आप 7 बजे से पहले आ सकते हैं? These now there is some position that you are addressing to somebody. With that position you are addressing. For instance, after the accident, he was in hospital for 2 weeks. इसी तरह से the fish comes after the soup. The letter B comes after A and before C. The preposition behind and in front of are more usual for place, but before it is used, before is used meaning face to face with. Now, for instance, इसी तरह से आपका इनको आप यूज़ करते हैं, you can use them, you can use it as look after means take care of, or after all may mean in spite of the fact, या इसी तरह से adverb के तौर पे after को यूज़ करते हैं। After is occasionally used for afterwards, especially to modify a noun, जब modifications और इन चीज़ों की बात आती है। अच्छा, इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें about की, तो it's a preposition and an adverb as well. About is used with verbs of movement meaning in various directions to various places. For instance,
After walking about the studio all morning, the actors were tired out. Would you like to spend a year traveling about the world? She is always changing the position of the furniture. She loves moving things about. यहाँ हुआ तो इस तरह से यूजेजेस होते हैं हमारे. एंड दिस इज एन utmost important thing कि आप इनके डिफरेंसेस को ज़रूर समझें एंड यू शुड यूज देम. अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज आती है द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए. अब जहाँ तक टेंसेस की बात आती है, यानी कि वक्त की जो बात आती है, वी हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस क्लास 6 हमारे टेंसेस स्टार्ट होते हैं और चलते ही रहते हैं. बट नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू वर्क first comprehend the concept of usage of present tense and then the present perfect tense. I'm giving you this task. Once you go through this video, make sure कि इसमें तकरीबन कोई 3 या 4 एक्सरसाइजेज हैं इन टोटल इस चैप्टर के अंदर. वो तमाम की तमाम एक्सरसाइजेज आपने कंप्लीट करनी है एंड देन you're going to give these exercises, you're going to submit these exercises in Ali Higher Secondary School's office, जिसकी टाइमिंग्स आप सबको पता ही है. 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आप आकर बिफोर सैटरडे. आफ्टर सैटरडे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा एंड दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट सबमिटेड दिस टाइम आई विल बी अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट. उनके ऊपर भी पेनल्टीज लग जाएंगे बिकॉज यू हैव 7 days एंड यू नीड टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल. 7 दिन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि यू जस्ट हैव टू कंप्लीट इंग्लिश वर्क बिकॉज इंग्लिश के साथ आपके पास 5 सब्जेक्ट और भी होते हैं. एनीवेज आई होप इट वाज a good lesson for you और आप लोग इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ेंगे. एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी सेड आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, आप लोगों को फेसबुक का पेज भी है. यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसोर्सेज जिनके थ्रू इवन आपके पास लैंडलाइन नंबर है अभी हायर सेकेंडरी स्कूल का. इवन इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स तो अंडर SOPs जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं हमारे, उसके थ्रू आप हम तक पहुँच सकते हैं. बट ज़्यादा नहीं, 1 या 2 करके शो दैट वी कुड रिजॉल्व इट. अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं यू कैन कंसल्ट मी फर्स्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट मैं आप लोगों को पर्सनली वहाँ पर टाइम दे सकूँ. जो हमारा इंटरमीडिएट का, फर्स्ट ईयर का, 9th का, मैट्रिक के ग्रुप्स बने हुए हैं, सो दैट आई कुड असिस्ट नॉट जस्ट मी बट किसी भी टीचर के साथ आपको अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड इफ यू वांट कि आपको क्वेश्चन एड्रेस हो सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो काइंडली वो ज़रूर कीजिएगा सो दैट वी कुड मूव स्मूथली. एंड इंशाल्लाह जब हमारे स्कूल खुलें तो इन चैप्टर्स को रिपीट करने की ज़रूरत हम लोगों को ना पड़े. Because time is very precious, we never know when we are going to come out of this pandemic. Anyways, I hope this lecture is to some extent fruitful to you. और जितनी भी questions हैं, queries हैं आपकी, वो भी submit कीजिएगा. And remember, before Saturday, coming Saturday, जब Monday को ये lecture upload होगा, तो उससे पहले, उसके बाद जो Saturday आएगा, उस Saturday से पहले मुझे ये exercises assignment की शक्ल में ज़रूर पहुँचा दीजिएगा. Thank you so much. Have a good day.